Hello dear students. As you know, we are discussed in the previous lecture about the ejection of electron by three methods. First one is thermionic emission, second one field emission, and third one is photoelectric emission. Now today we are study about dual nature. When the light is used to taken out the electron in the form of photoelectrons, then the light can be treated only as packets of energy, that is a quantum energy. If we take it as a light, the wavefront of a particular amplitude falling continued on an electron, then electron is not ejected out. If we take that format of giving energy, but if we take format of a gun which is giving the bullet, that is photons are coming and hitting the metal, and each photon have a particular energy level, then we can explain now what was done. Hollows and Leonard in their experiment. So they proved in the experiment that light travel in the small packet of energy and not as a wavefront which is having a amplitude and which is continuous giving energy. So that experiment, after knowing the characteristics of work function and its meaning, now we will study the famous experiment which name is photoelectric effect, or it is also called Leonard's experiment. So now see in the diagram, one aviated glass tube is taken here and is that will be the source of light, which is a variable source of light. We can vary either the intensity either the frequency, मीन्स चाह तो हम उसकी लाइट की पावर बढ़ा सकते हैं. जैसे फर्स्ट हमने 100 वाट का बल्ब लिया, देन हम 200 का ले रहे हैं, देन हम 500 का ले रहे हैं. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू चेंजेस देयर इंटेंसिटीज़. और secondly, we are going to change the frequency. When we are going to change the frequency, then we take the intensity constant. Like we take the so many colorful bulbs like yellow, red, green, orange, red, etc. But they have same power, means intensity, that is 100 watt. So the light is enter from the girds, and this is a photosensitive plate. Photosensitive plate means that is only work when the light is incident on it. The light is falling on it, and here is the another plate, and connected it out at the end of one battery is used in this to apply the potential difference, and this potential difference is controlled by the rheostat. As you know, rheostat, which is a variable resistance which control the current. So we are using the rheostat here to controlling the potential difference, and voltmeter and ammeter is also used in this diagram. So voltmeter help us to measure the potential difference applied across the two ends of the plates, and ammeter give the value of current which is supplied in this whole circuit. Now when the light is incident on the plate,
we want to study its two properties. One is intensity of light and second one is frequency of light. Intensity of light means power. When we are wearing the power, or here when we are wearing the colors. So intensity is work with power, frequency means color. इंटेंसिटी में क्या लेते हैं, जैसे हम फर्स्टली वी टेक use 20 watt, then 40 watt, then 100 watt, then 500 watt, like this. So to increase the intensity we need to increase the power of the light, or if we want to change in the frequency, so we need to change in the color. So as you know, frequency is equal c upon lambda. Nu is equal c upon lambda. This one is the frequency, the speed of light, and that one with the wavelength. So as you know, all the colors that they have the different wavelengths. So when we are going to change the wavelength, then the frequency is already changed with the help of changing the wavelength. Like red color have the high wavelength, then the red color have the low frequency, because frequency and wavelength both are reciprocal to each other. So this is our arrangement. Now we start the practice. We will try to make out the different result, why this result come. So our first topic is for a particular light and frequency. That is the graph. We show our first point when the light is incident on this plate. This plate, that is a photo sensitive plate. This is also known as emitter and C for collector. J emit करेगा और J उसको collect करेगा. When the light is incident on this plate, due to this certain current will pass through the circuit. So from the graph it show a linear relation, and this linear graph tell us as we increase the intensity, then the photoelectric current also increase. As we more increase the intensity of light, then the more photoelectric current. So this graph shows the linear graph which tell us that intensity of light is directly proportional to photoelectric current. Both are directly proportional to each other. As we increase the intensity of the light, so the photoelectric current will also increase. Now what is our conclusion about that? With the help of wave theory we can say if the intensity is increased, then wavefront amplitude also increase, therefore energy increase. This implies that the current is also increase. So जैसे ही हम यहाँ पे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, जितनी यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो ये इंटेंसिटी दैट आर द पैकेट ऑफ एनर्जी फोटोन्स, सो ये उसी प्रकार से हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाएंगे. ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो कलेक्टर उसको कलेक्ट करेगा और कंटिन्यूसली वो उसका वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कारण हमें एमीटर हमारी एक रीडिंग देता है. कैसी रीडिंग देता है? एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी the photoelectric current also increase. So from this graph we say intensity of light is directly proportional to the current. Now there is a concept of threshold frequency. V0 is known as threshold frequency. This V0 is known as the threshold frequency. So what is threshold frequency? It is the minimum frequency which the incident radiation must have so as to release the electron from the metal surface
below the threshold frequency no electron is released from the metal. As photon energy equal h nu नॉट. सो इसमें क्या होगा, फ्रॉम दिस कंसेप्ट व्हाट वी ऑब्जर्व, इसमें हमने ये देखा है कि कम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. जैसे हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी. जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, जैसे आपका बिप स्क्वायर होता है. बिप स्क्वायर में क्या होता है कि वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहती है, अधिक रहती है, और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है. और मान लीजिए जहाँ पे येलो लाइट आ गई मिडल बिटवीन, तो इसमें क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे जो भी सोर्स डाला हुआ है, मान लीजिए हम यहाँ पे रेड सोर्स डाल रहे हैं, तो रेड सोर्स से पहले हमने 5 वाट का डाला, देन 10 वाट, 50, 30 और 100, हम 500, हमने 5000 तक भी जहाँ पे चले गए, लेकिन जहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला. दैट मीन्स वहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी रही, 0. ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले गए. लेकिन मान लीजिए जैसे ही हम इस पर येलो कलर डालते हैं, आइदर इट इज़ 5 वाट और 10 वाट, तो ये क्या करता है, ये थोड़ा सा करंट उसमें से बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है. अब देखिए जैसे ही हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स पहले उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, फिर उसमें 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, ऐसे इसमें इंक्रीज़ करते जाएगा. लेकिन जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं, अब हम येलो की प्लेस पे यहाँ हमें कौन सा डाल रहे हैं, हम इंडिगो या वायलेट डाल रहे हैं. अगर हम यहाँ पे वायलेट डाल रहे हैं, तो वायलेट से क्या होगा यहाँ से करंट जैसे ही हम 10 वोल्ट का भी डालेंगे तो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाएगी, और जिसके कारण हमारे पास करंट भी एकदम से इंक्रीज हो जाएगा. तो क्या देखा हमने कि कम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, तो हमने अब उसकी वोल्टेज भी इंक्रीज़ की, फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, बिकॉज हमें पता है कि एनर्जी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड्स नहीं करती. क्यों नहीं करती? बिकॉज वी नो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज, जैसे ही हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. बिकॉज फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू विच इज़ इक्वल दी वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन का हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वर्क फंक्शन क्या होता है, दैट इज़ अ मिनिमम एनर्जी विच help to eject the electron from its surface. So now we goes to in the next mode. This will the photocurrent and that will be the frequency. That means the collector plate potential from this side when we are going to take it positive, or that means with the retarding potential. At this level, that is known as the cutoff potential, or that one be the 3 different types of intensity, I1, I2, I3, and here frequency is constant. So frequency क्या है हमारी यहाँ पे constant है. that means हम एक ही कलर का जो सोर्स है वो ले रहे हैं, जिसके उसी को लेकर हम आगे इसको वेरिएशन कर रहे हैं. So when we are giving a potential difference between the two plates A and C, so at the level of current, when we increase the potential difference, the current going start increasing. कैसे? जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ से देखा कि हमने येलो कलर डाला तो वो इंटेंसिटी उसकी बढ़ना, एक इंटेंसिटी ऐसी थी जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए 50 वाट का बल्ब लिया, तो ये करंट क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक तरफ जाके ये सैचुरेटेड हो जाएगा, बढ़ना बंद कर देगा. उसकी आगे ये करंट नहीं बढ़ रहा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी हम इसकी फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी, लेकिन हम इसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं.
तो ये करंट क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। जैसे व्हेन वी आर गोइंग टू डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, देन जैसे देखिए हमने क्या किया, ये इस साइड हमारा पॉजिटिव था, इस साइड हमारा नेगेटिव था। हमने पहले यहाँ पर हमने -1 पोटेंशियल दे दिया कलेक्टर के पास। ऐसे ही -1 पोटेंशियल देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल प्लेट से एमिट हो रहे हैं, यहाँ से जो एमिट हो रहे हैं तो ये उनको रिपेल करेगी। बट कुछ इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी -1 से ज़्यादा होगी वो इसको परिधि के साइड पे रिपेल करके आगे चले जाएंगे। तो जैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और एमीटर को कुछ करंट मिलेगा। जैसे ये हमारा करंट, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास करंट भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल को ये पार करेंगे तो हमको करंट थोड़ा मिलेगा। ऐसे ये नेगेटिव टर्मिनल को पार करते हैं तो करंट मिलेगा। देन एज वी अगेन डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस एट वन लेवल, द करंट बिकम ज़ीरो, at which the voltage the current becomes zero is known as the stopping potential और कट ऑफ पोटेंशियल। इसे हम दोनों तरफ से बोल सकते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जहाँ पे ज़ीरो हो गया, सॉरी एक पोटेंशियल दिया जब हमारे पास करंट ज़ीरो हो गया, दैट इज नोन इज कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। So what we find from the graph, as we increase the intensity the current do change but stopping potential is same for all। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम यहाँ पे पहले हमने 100 वाट लिया था, अब हम 200 वाट लगा दे रहे हैं I2 का। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जितनी हम उसको इंटेंसिटी डालेंगे, दैट मीन्स चमक डालेंगे, तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। लेकिन क्या होगा, जितनी हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन सभी के सभी करंट एक पोटेंशियल पे जाके वो सैचुरेट हो रहे हैं। लेकिन जब हम उसको डिक्रीज़ करते हैं तो वो डिक्रीज़ होते होते एक ही वैल्यू पे आके वो क्या करते हैं, दे बिकम ज़ीरो। सो नाउ व्हाट इज़ द इंसिडेंट ऑफ कट ऑफ पोटेंशियल, इट इंडिकेट दैट एनर्जी, it indicate that energy. So cut off potential in photoelectric effect, it is the negative value of the potential give to anode due to which the current becomes zero. I repeat again, in photoelectric effect it is the negative value of the potential give to anode due to which the current becomes zero. As you know, the kinetic energy हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास EV0 हो जाएगा तो हमारे पास किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। कैसे, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्रॉन उनकी क्या बढ़ रही है, किनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जैसे वो किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे पास उसमें जो करंट है वो बढ़ेगा। लेकिन एक तरफ जब जहाँ पे पोटेंशियल कैसे ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे हम ये हाइट की बात करते हैं तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और जहाँ पे किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जब हम दोनों की तरफ से चलते तो मिड बिटवीन क्या होगा, ऑपोजिट के कारण जी यहाँ पे दोनों की कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन जब हम इधर से हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू और हम उसको नेगेटिव वैल्यू सेम डाल रहे हैं तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। सो किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल EV0। So now the question is arise here, why the all intensity have same cutoff potential? So the answer is because they all have same frequency. Due to same frequency, each photon have same energy. Due to this, the stopping potential is same for all intensity. क्योंकि जितने भी यहाँ से फोटोन निकलेंगे, मान लीजिए एक हमने यहाँ पे अगर हम रेड ब्लू का डाल रहे हैं तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो भी मान लीजिए उसकी पावर भी 2 है, जो 1000 वाट के साथ निकलेगा उसकी भी 2 रहे। क्यों? बिकॉज दैट इज़ डिपेंड अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन इट्स इंटेंसिटी। सो आइदर वी इंक्रीज द इंटेंसिटी बट they are depend upon their frequency, because
फ्रीक्वेंसी के कारण ही उसमें जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, उसको वो पावर मिलने वाली। नाउ अगेन आई चेंज द वेरिएशन, आई टेक ऑल द इंटेंसिटी सेम बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मीन्स जो मैं यहाँ पे पावर ले रहा हूँ वो मैं सभी के सभी 200 वॉट की ले रहा हूँ, लेकिन जो कलर है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वो मैं चेंज कर रहा हूँ। So, due to this different frequency, we see in the graph which is observed by this variation. So, this is, I think, as we take this one with the yellow frequency, yellow light, or this one with the red light. And when we taking the yellow color, then firstly the current increase at one level it going saturated, but when we are decreasing the potential, then it धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, वो कम हो रहा है, then it decrease the value of current at one level it become ज़ीरो। अब देखिए इसमें हम फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी है दैट इज़ कांस्टेंट। ठीक है बेटा। सो दैट वन बी द रिटार्डिंग पोटेंशियल एंड दैट वन बी द कलेक्टर पोटेंशियल। रिटार्डिंग जब हम वापस आ रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द ग्राफ एनर्जी नॉट रिलेटेड टू इंटेंसिटी। व्हेन आई इंक्रीज द वोल्टेज द करंट एट वन लेवल इट बिकम saturated. Now when I decrease the voltage, then the current decreases at a particular level and it becomes zero, which is stopping potential. Now when I change the color, means when I change the frequency and again increase the voltage positive, and the current is also increased and become at the same level, it becomes saturated as the first saturation. When I decrease the voltage, then the current also decrease, its cutoff potential is not as same as the first frequency, it stop at different value. So according to the quantum theory, energy, photon have energy according to its color, not with its intensity. So different energy, photons have different energy. So sorry, different colors have different energy of photons. So from the graph we can see energy of electron is directly proportional to the frequency, not intensity. तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी द करंट गोइंग इंक्रीज, बट एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी इट डजेंट मीन कि उसकी एनर्जी बढ़ेगी। सो करंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, नॉट। नाउ वी आर go through those points which clear cut indicates which where wave theory fails and quantum theory proved with the help of this experiment. So points are as this. So failure of wave theory in photoelectric effect experiment as shown. First one is according to wave theory, higher amplitude in higher energy, but according to wave theory, higher amplitude is higher energy, but experiments show that even larger amplitude could not give higher energy. So second failure, the same intensity but different frequency, means color has different energy, could not be explained. The concept of threshold frequency could not be explained. So जो हमारा वेव थ्योरी है वो हमें ये बता नहीं पाई, इसको हमने जो प्रूव किया है दैट इज़ ड्यू टू द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी. सो थर्ड फेलियर, concept of wavefront should take some time, give energy simultaneously to many electron, and second, many electron be ejected together, but experiments show that ejection is instantaneous and not for a longer time.
as large quantity, which is contrary to wave theory. So these are the failures of photoelectric effect with wave theory. बट हम ये नहीं कह सकते कि वेव थ्योरी फेल हुई, जैसे डिफ्रैक्शन वगैरह हैं उनमें वेव थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो इसको हमने क्वांटम थ्योरी के साथ एक्सप्लेन किया. सो दैट इज़ ऑल ओवर अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो थैंक यू.